Good morning, students. Welcome to the lecture series of Software Engineering Technique. In my previous lecture, I have discussed about the requirement analysis and the specification. There are basically three phases in the requirement analysis and specification: requirement gathering, requirement analysis, and the requirement specification. In today's lecture, I will discuss the requirement gathering and the requirement analysis in detail. So let's come to the requirement gathering. Requirement gathering is also known as requirement elicitation. Here in this requirement gathering phase, first the analyst starts gathering activity by collecting all the information that could be useful in the development of the software. Now the question arises, who perform this requirement analysis and specification? Basically, there are some members are selected from the development team and they are called analyst. जो हमारा development team होती है उसी में से कुछ लोग requirement gathering and specification का काम करते हैं and these people are called analyst. So meanwhile the lecture I am going to use the word analyst frequently. Now, how we gather these requirements? First of all, in order to find out the correct requirement of a software, we have to go through the existing document. If अगर आपके पास if you are going to develop a software और उससे related सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है या पास्ट में वैसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, देन वी हैव टू फॉलो द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दो सॉफ्टवेयर. सो बाय यूजिंग दोज डॉक्यूमेंट्स आप रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Then we have to discuss with the customer and the user. While interviewing with the customer and the user, we can find out the requirements needed by the software. Also, we have to perform the analysis of input and output. हम सॉफ्टवेयर को क्या इनपुट देंगे and what the output will be produced by the software, and all the things need to be analyzed very carefully. Now let's see how the requirement gathering and the requirement analysis and the specification takes place. Here first from the needs, first we need to find out the need of the requirements, need of the user. From the user we can find out, first we need to gather the requirement. From once we gather the requirement, we will go to the requirement analysis. सबसे पहले कस्टमर के नीड्स को फाइंड आउट करना है and then we will try to उनके नीड के अकॉर्डिंग ही we will try to find out, we will try to gather all the requirements. Once the requirement is gathered, we will go for the requirement analysis. Once the requirement analysis is done, we will go for the requirement specification. Requirement specification का means we have to go for the document, we have to document all those requirement, and after that we will review whether all the requirements that are documented are proper or not, they are sequentially, they are properly documented or not, and the final outcome that we get in this phase is your SRS document. Now how we gather the requirement, हम कैसे, it is very difficult task to find out all the requirements that is needed by the customer from the software. So what will be the procedure to find out the requirements? तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट से. सबसे पहले हमारा स्टडिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन. अगर आपके पास, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं और उसके जैसा
अगर पास्ट में सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को रेफर करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। यस, कुछ नए रिक्वायरमेंट्स ऐड ऑन होंगे, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, दैट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। नाउ सेकेंड वन इज द इंटरव्यू। वी देयर आर डिफरेंट यूजर ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर के बहुत सारे यूजर होते हैं, सो वी हैव टू इंटरव्यू with all this user and we will try to find out the requirement of the software. For example, let's consider a library information system. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत सारे यूजर होते हैं, लाइक रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट, स्टाफ, librarian, accountant. These all are the user of the सॉफ्टवेयर, और सब के अलग अलग नीड है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर हम स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर या स्टाफ से इंटरव्यू करते हैं रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन दे वांट्स हाउ टू इशू अ बुक, हाउ टू रिटर्न अ बुक, हाउ टू फाइंड आउट अ न्यू बुक। दे विल ट्राई टू ऐड दिस फीचर इन द सॉफ्टवेयर। और अगर हम लाइब्रेरियन से इंटरव्यू करते हैं तो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, हाउ टू चेक द ओवर ड्यू ऑफ द बुक, हाउ टू ऐड अ न्यू मेंबर इन द रिकॉर्ड, हाउ टू डिलीट अ मेंबर। सो वी कैन सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर एनालिस्ट जो होते हैं वो हर एक यूजर के साथ इंटरव्यू करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। सो तो द सेकेंड प्रोसेस of gathering requirement is to interview with all the types of user of a software. Now third is the task analysis. What do you mean by a task analysis? Generally, the user consider the software as a black box. They are bothered about the services provided by the software and each task is called a service. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है उससे रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज है दैट नीड टू बी फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर एक यूजर को बुक इशू करना है। तो बुक इशू करने से के लिए व्हाट आर द टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड। फर्स्ट वी नीड टू ऑथेंटिकेट द यूजर। सबसे पहले हम यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। देन वी विल चेक कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक यूजर को इशू कर दिए गए हैं। अगर कर दिए गए हैं तो नो मोर बुक विल बी इशूड, और अगर नहीं किए गए हैं तो हम देखेंगे कि जो बुक के लिए उसने रिक्वेस्ट रखा है क्या वो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है देन डेफिनेटली द बुक विल बी इशूड टू द यूजर, और अगर वो बुक रिजर्व्ड है तो बुक विल नॉट बी इशूड टू द यूजर। और वंस द बुक विल बी इशूड टू द यूजर देन अ slip will be given to the user so that he can show it at the counter. So these all are the tasks related to a given service. So the analyst needs to find out all the tasks. Now comes to the scenario analysis. In scenario analysis we will try to find out all the scenario or different type of operation associated with the task. For example, let's consider that when कि एक टास्क के साथ क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। अगर किसी ने बुक इशू किया गया है और अगर बुक उसको सक्सेसफुली इशू किया गया है तो डेफिनेटली उसको एक स्लिप मिलेगा, जो स्लिप वो काउंटर पे दिखा सकता है। सेकेंड, कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इशू अगर उस यूज़र को मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इशू कर दिए गया है तो फिर उसको और कोई बुक इशू नहीं होगा। थर्ड, ये सिनेरियो हो सकता है कि थर्ड सिनेरियो कैन बी दैट इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक अगर इसको इशू कर दिए गए हैं तो और बुक इशू नहीं होगा, और जो बुक उसने
रिक्वेस्ट किया है, अगर वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो भी उसको और कोई नया बुक इशू नहीं हो सकता. So this